Good evening, everyone online. Am I audible and visible to everyone? Hi, Himansh and Anushri. Am I audible and visible? Can we start it off? Good evening, Mansi. Great. All right, so let's begin with the daily current affairs for today, 5th November 2022. So the very first one that we have is air pollution in Delhi. So इसमें हम लोग एयर पोल्यूशन इन दिल्ली के बारे में भी बात करेंगे एंड एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू दैट फॉर दैट मैटर the sort of authorities that are working to ensure that the pollution levels in the capital city it becomes a little lesser, and the various many reasons because of which this air pollution is taking place, because we've seen the CLAT sample paper. Environment seems to be a very very, very important thing here. What do we get here? We get daily current affairs for CLAT aspirants, right? So the very first thing is air pollution in Delhi. Let's start it off. Now, we must have read it in our news that, for some days now, the air pollution level in Delhi are deteriorating. And so Arvind Kejriwal is considering taking a lot of initiatives so as to reduce the pollution levels. What are those initiatives? They are basically thinking of an order has been issued that the education department, the government education department, should give a chutti to the students for some time till Tuesday. There is another thing that they are thinking about, which is starting of the odd even vehicle rationing system, which they had done previously, कि एक दिन odd वाले vehicles होंगे, एक दिन even वाले vehicles होंगे. Of course, some vehicles are given exemption in this particular category. Then also the Bharat standards. Now, this is something that I want you to do on your own. And of course, we will do this in detail in our next class. So the Bharat standard emission standards, what is BS6, what is BS3, what is BS4, when did these standards start, who is the one who's taking care of all of that, that is your homework. The rest of it, we will do it today. Now, let's start off with the very first thing. So AQI, which is also known as the Air Quality Index. Now, what is this basically? It is a number which is used to communicate to the public how polluted the air currently is. And this is also a way of taking proactive measures in terms of air pollution in any metropolitan city. So there are 6 or 8 pollutants that are affected in the air, and the pollutants that they are taking care of in this air quality index. So the air quality index is not just talking about one particular pollutant, it is talking about 8 pollutants, and it is assigning a weightage to each and every pollutant based on the fact कि ये हमारी human life के ऊपर किस तरीके से impact कर रहा है. So जो ज़्यादा drastically impact कर रहे हैं उनको ज़्यादा weightage दे दी, जो थोड़ा कम impact कर रहे हैं उनको कम weightage दे दी. So the particulate matter, 10, particulate matter 2.5, ozone, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide, ammonia, they act as a major parameters in deriving the air quality index. What you can possibly see over here is carbon dioxide is not really mentioned here because of the fact that, in carbon dioxide, they say a little bit of it is even important for us and it does not directly affect our respiratory system. And the things that directly affect the respiratory systems are the pollutants which are mentioned in the air quality index. So there are some stages to the air quality index. And with respect to that stage, we take certain measures. So the very first stage is AQI poor, which is when the index is basically giving a figure from 201 to 300. Herein, we are going to stop all the construction and demolition activities with the plot size of 500 square meters or more. The second one is mechanized sweeping and sprinkling water on the road so that the matter settles down and it is not there in the air. Then utilization of anti-smoke guns in the construction areas, enforcing the ban on open burning of waste, discoms, which are basically the distributing company, to minimize the power supply interruptions in the national capital region, and it encourages offices to start unified commute for all the employees कि मतलब different गाड़ियों में ना जाए वो लोग, एक particular हम लोग बस वगैरह बना लें जहाँ पे सारे के सारे साथ में commute कर सके, so that the quality becomes better in the air. Now the stage 2 is very poor category.
is 301 to 400 on this particular index with these 8 pollutants, wherein we are not allowing coal or firewood in hotels, stopping the use of diesel generators. There are certain exceptions wherein there is essential and emergency services like hospitals and railways, metro, airport, water pumping stations, because these are very, very essential for our everyday life, and also projects of national importance. Wahan pe diesel generator can work, but otherwise not. Then enhance the parking fee so as to discourage, people respond to incentive, they also respond to disincentives. So if I have to pay a lot of parking fee, I might as well start using public transport. And augment or increase the use of CNG or electric bus or metro services. So then stage 3 is AQI severe category, which is 401 to 450. Again, we are going to ban construction and demolition activities. But in the previous one, we saw that the ban on the construction activities was in an area with a plot size of 500 square kilometers or more. यहाँ पे फिर हम लोग और भी areas में construction sites को हम लोग छोड़ देंगे, except for, let's say, railway, metro, hospitals, basically ऐसी type की services which are very, very essential and which are emergency services in our country. Then closure of certain industries, which are not running on approved fuel. जहाँ LNG वगैरह हम लोग नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं. एंड जो मैंने भारत स्टैंडर्ड्स की आपको बात की है, जैसे BS6 हम लोग अभी यूज कर रहे हैं फ्रॉम 2020, सो BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल 4 व्हीलर्स को रोक देना. Then the last one is stage 4, which is known as the severe plus category, where the air quality index, the number there is more than 450. फिर इसमें हम लोग और भी ज़्यादा strict actions लेते हैं. For example, stopping the entry of truck traffic into Delhi except for essential services, or electric trucks are also all right because they are not really spoiling the air quality in Delhi. Then banning on the plying of Delhi registered diesel, medium and heavy goods vehicles except for essential services. Then again, Bharat standard, 6 vehicles can ply but not the others. But of course, there's always an exception of emergency and essential services. Then state government may also ask the schools to, give chutti to the children, and which is what has happened this time. And NCR state government should start saying and telling the public offices and the municipal offices and the private offices even that you should start working on 50% of the strength, work from home karana shuru kar dena. And so those are the kind of activities, construction and demolition activities also on highways and roads and flyovers can be banned. Now, what is GRAP and how is its measure to combat Delhi NCR's air pollution different this year? If I have to say it in one way, they are more proactive this time rather than being reactive in nature. So they are not waiting for the very, very severe category to happen. They are in the severe category, but they are going to use the terms and conditions of the very severe category or the severe plus category. So more proactive than reactive this particular year. Now, what is this graded response action plan? Now, graded response action plan, hello to everyone, is basically a set of emergency measures which kick in when the air quality index, reaches a certain criteria. तो अच्छा ये वाला criteria है, तो graded response action plan ये हो गया कि ban your construction activities. अच्छा बहुत ही ज़्यादा severe हो गया, तो चलो ठीक है, commute हम लोगों ने public offices में साथ में करना शुरू कर दिया. या it comes to the severe plus category, then let's just keep it at a 50% in our workforce. Let 50% be back at home. So that is what they are talking about. This, how is GRAP or how is the graded response action plan different this year? It is different because of the fact, now you're seeing a lot of authorities like the Indian Institute of Tropical Meteorology or the Indian Meteorological Department. All of this will be done, but we are doing it step by step. This will be done in this very session itself. Let's first understand the graded response action plan and how it is different this time. So graded response action plan was first notified in January 2017. And who has put this out? This is Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Now, this was basically based on a plan that was given by the Central Pollution Control Board. We will deal with Central Pollution Control Board and its head and everything
with respect to our competitive examination जो भी हमें पता होना चाहिए वो सब कुछ हम अभी करेंगे, but step by step. So this was based on a plan given by the Central Pollution Control Board कि चलो हम कैसे ये action plan ले सकेंगे, right? Now in this version of GRAP, measures will kick in after pollution concentrations reach a certain level. This year we are more preemptive in nature or more proactive in nature than reactive in nature. So for example, the older version of GRAP was enforced only based on the concentration of particulate matter 2.5 and particulate matter 10. This year, we are also taking more pollutants into consideration. For example, ozone, sulfur dioxide, oxides of nitrogen, so on and so forth, जो हमने 8 के बारे में बात की थी. Now, what are the measures that will be enforced this particular year? Now, for the first time, it specifies that NCR may impose restriction on Bharat Standard 3 and Bharat Standard 4 diesel, petrol and diesel 4 vehicles, जिनको हम लोग except for emergency and essential services. The rest of them may be banned this particular year when the AQI is likely to reach the severe category. So ideally, we used to do it when it was severe plus category, but now we are doing it in the severe category. And in the severe plus category, we are imposing a ban on all the four-wheelers except for B6 vehicles. Fine. Now, restriction on some construction activities, जैसे कि हमने पढ़ा था, वो सारी की सारी होंगी, except for the ones which are very, very essential, and we've already dealt with that, so we don't need to read about it again and again. Apart from that, in the severe plus category, we are also going to start off with the odd even basis, may also start off with the odd and even basis. Based on your number plate, odd wale din ye wali gaadiyan chalengi, even wale din ye wali chalengi. Exceptions, of course, are always there to the rule. Now, who will implement this particular thing? This is the CAQM. Now, CAQM क्या होता है ना? It includes the people from the member secretaries of the pollution control boards of Uttar Pradesh, Delhi, Haryana, Rajasthan, Central Pollution Control Board. ये सारे के सारे अभी हम कर लेते हैं. Now, what are we doing? We are being preemptive. So, जो हमारा air quality index है, अगर हमें लग रहा है कि और ज्यादा बढ़ने वाला है, सिवियर कैटेगरी में जाने वाला है, तो हम 3 से 4 दिन पहले ही ये वाला काम करना शुरू कर दें. Now, what are the authorities that are involved in this particular thing? The very first one is called SAFAR. SAFAR का full form क्या हो गया? System of Air Quality and Weather Forecasting and Research. Research की spelling बहुत ही बेकार लिखी हुई है, उसको please kindly don't look at that, right? So System of Air Quality and Weather Forecasting and Research. ये वाली चीज कब बनी थी? तो 2010 में बनी थी. It was inaugurated at the Jawaharlal Nehru Stadium on the occasion of Commonwealth Games, New Delhi. Now, Ministry of Earth Sciences के अंदर ये चीज आ जाती है, and also under the Indian Institute of Tropical Meteorology, which is in Pune. Next, we will do the tropical meteorology. First, let's talk about SAFAR. So, under this plan, इन्होंने क्या किया है? We introduced this system which is going to check the air quality and which is going to do weather forecasting and it is going to do research, right? So, it is going to provide location-specific information on air quality in near real time. बिल्कुल ही real time तो नहीं हो पा रहा है, but near real time पे हम करेंगे. और कहाँ पे कर रहे हैं ये? Metropolitan cities of India, and forecast 1 to 3 days in advance for the very first time in India, so that instead of waiting for the air quality to reduce to the severe plus category, let's start taking the initiatives when it is in the severe category itself. Now, who has developed this particular system? The Indian Institute of Tropical Meteorology, along with ESSO partner institutions, namely Indian Meteorological Department, National Center for Medium Range Weather Forecasting. And this is made possible only and only because the local governments are also doing their bit. So local municipal corporations से local educational institutions तक और बाकी सारी की सारी जो governmental agencies हैं, they are also really collaborating with the SAFAR system, and that is how we are able to
make sure that we can take a proactive approach in case of air pollution. So this monitors all the weather parameters like temperature, rainfall, humidity, wind speed, wind direction, UV radiation and solar radiation. And इसके अंदर कौन से pollutants आ गए? तो again particulate matter 2.5 and 10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन एक नया हमने देख लिया, टूलीन, xylene and mercury. So these are the pollutants that are seen by the SAFAR system, which has been made by the Indian Institute of Tropical Meteorology, which is based in Pune. Now, what is this Indian Institute of Tropical Meteorology? Firstly, the man who is chairing this particular meteorological department is Dr. R. Krishnan. He is the director of this particular institute. अब ये institute क्या है? Autonomous institute है. Of course, this is also under Ministry of Earth Sciences. Now, why is this institute? Why was this institute made? So the need to study the fundamental atmospherical problem and the mechanism कि monsoon कैसे हो रहा है, climate change का क्या difference आ रहा है, weather system क्या है इंडिया में. तो ये सारी की सारी चीजें became very, very acute for India in the 1950s when we realized post-independence that our economic development program really depends upon the weather in our country. And why does it depend on the weather? Because obviously then and now we are more agrarian in nature than industrial or services sector oriented, because majority people or majority chunk of the workers in India are in the primary sector. So hence, considering the need, the World Meteorological Organization in its third Congress, in its third meeting, they said, let's make these research and training institution in the tropical countries. And ye wala humne cheez 1962 mein jaake, we formally approved this particular thing. Now, 1962 में कौन सा वाला प्लान चल रहा था? प्लानिंग कमीशन का थर्ड 5-year प्लान, एंड दैट इज व्हेन वी मेड दिस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी इन 1962, एंड इट इज बेस्ड इन पुणे इन महाराष्ट्र. This is a distinct unit of the Indian Meteorological Department, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में देखेंगे. जैसे हीट वेव की बात अगर करें, या फिर कहीं पे जैसे अमरनाथ में क्लाउड बर्स्ट वगैरह हुआ था, तो ये सारी की सारी चीजें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर आ जाती है, जिसके अंदर फिर हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी भी आ जाता है. Now let's go ahead. The next one is the Indian Meteorological Department, again the Ministry of Earth Sciences. So no point in guessing, of course Ministry of Earth Sciences के अंदर ही ये चीज आएगी. हमने 3 के बारे में बात कर ली है. एक तो सफर सिस्टम है, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और एक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. तीनों के तीनों किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. नाउ द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज मृत्युंजय मोहपात्रा, is something that you can keep in mind. Now if we talk about meteorology, when did it begin in India? So you will be surprised to know that the origin of the meteorological department or the study of meteorology can be traced to ancient times in India. In fact, even in our Upanishads, it was written कि serious discussion कि cloud formation कैसे होता है, rain कैसे होती है, seasonal cycles क्या होते हैं, movement of the earth around the sun से हमारे seasonal cycles किस तरीके से change होते हैं. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी रिकॉर्ड लिखा हुआ है about the scientific measurement of rainfall and its application to the country's revenue. Again, you can relate that to the agrarian nature of Indian economy. Kalidas in his epic Meghdoot. अब मेघदूत से not related to the question in hand, somehow related, but there is these Meghdoot machines that have been introduced in the Mumbai stations. You're going to tell me वो Meghdoot machines कर क्या रहे हैं? So मुंबई के स्टेशन में जैसे दादर, विक्रोली, CST, इन सारे के सारे स्टेशंस में हमने ऑफलेट एक मेघदूत मशीन बनाई है. आपने पढ़ा भी है इस चीज के बारे में. ये मेघदूत मशीन का पर्पस क्या है? What is it doing? So कालिदास के एपिक में उनकी लिखी हुई एक बहुत ही एपिक बुक में, which is called
Meghdut, which was written around the 7th century, it also mentions the onset of monsoon over central India and traces the path of the monsoon clouds. Look at the way we were. And, we've always been so vigilant about things and always been pioneers in different things. वो पता नहीं चलता बाकी देश को, बाकी विदेश के देशों को, क्योंकि हमने जिन शब्दों में, जिन भाषा में ये चीज लिखी है, वो अनफॉर्चुनेटली ट्रांसलेट नहीं हो पाई. Now, meteorology, as we perceive it today, I'm waiting for, and especially the kids who have done this, Meghdut machines kiya hai beta, please tell me what is it about. So meteorology as we perceive it now has firm scientific foundation in the 17th century. It was in 1636 that Halley, a British scientist, had published a treatise on Indian summer monsoon, wherein they were talking about heating of the Asian land masses and the Indian Ocean and their impact on the seasonal reversal of winds. Pure water generator, good Mansi, very good. At least I was waiting for 2-3 answers, but ek ne bhi de diya, I'm happy with that. Now, the next thing is India is fortunate to have one of the oldest meteorological observatories of the world. In fact, British East India Company ने establish किया था ऐसा station at Calcutta in 1785 and Madras in 1796 to study what? To study the weather and the climate. The Asiatic Society of Bengal, which was formed in 1784 in Calcutta and in 1804 in Mumbai, also promoted scientific studies in meteorology in India. अभी तुम देख लो कि ये आज की बात नहीं है, ये कई सालों से हम काम कर रहे हैं इस चीज के ऊपर. Captain Harry Piddington at Calcutta had published 40 papers during 1835 to 1855 to talk about cyclones and how they are made, and he called it, the coil of a snake, and what are the reasons, what will be the impacts, all of that is written in that. In 1842 he published his monumental work on the law of the storms, ki storms kis tarike se hote hain. A disastrous tropical storm had struck Calcutta in 1864, and this was because of the failure of the monsoon rains in 1866 and 1871, and so hence in 1875 the government of India created the Indian Meteorological Department ताकि हमें पता चल सके, हम प्रोएक्टिव हो सके. कोई अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन भी आ रहा है तो एटलीस्ट वी आर एबल टू take the people away from that place. We are able to, resettle them in some other areas so that zyada disastrous consequence na ho sake because of these particular cyclones or storms in our country. Mr. H.F. Blandford was appointed as the meteorological reporter to the government of India. And the first Director General of this observatory was Sir John Eliot. You have to know that, right? Who was the first Director General of this particular department. And so hence, initially it had its headquarters in Calcutta, and later the headquarters was shifted to Shimla, then to Pune, and finally to New Delhi. So right now, Indian Meteorological Department has its headquarters at New Delhi. The next one is Central Pollution Control Board. इसको आपने single plastic use ban के time पे भी पढ़ा होगा class में कि who is the monitoring agency of the single use plastic in our country. At the central level, it is the CPCB, and of course state level पे State Pollution Control Board. Now Central Pollution Control Board का chairman कौन है? Tanmay Kumar, IAS officer. Now this is a statutory organization made under the Water Prevention and Control of Pollution Act of 1974. Later on, it was also entrusted with the powers and the functions under the Air Prevention and Control of Pollution Act of 1981. तो दो चीजें, एक water pollution, एक air pollution. किसके अंदर आ जाएंगे ये? Ministry of Environment and Forest. Because right, field information भी ये provide कर सकते हैं. Now principal functions जैसे कि it is spelled out in Water Pollution Act and Air Pollution Act, so they will take care of air quality monitoring and they will also take care of water quality monitoring. Right, so National Air Monitoring Program has been established with its objectives कि कैसे हम air quality के trends को पढ़ें, उनका status देखें, एयर क्वालिटी को कैसे हम बेटर कर सकते हैं,
कैसे हम लोग इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस को हमें कहाँ पे बनाना चाहिए ताकि रेजिडेंशियल एरियाज तक उसका इम्पैक्ट ना पड़ सके, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो सेड दैट राइट टू breathe clean air or to drink clean water also does form a part of Article 21. इसी में MC मेहता के केसेस हमारे दिमाग में आ जाते हैं, right? So water quality monitoring and air quality monitoring, these are the two things that are taken care of by the Central Pollution Control Board. Now let's go on to the next one. Now, reasons for Delhi air pollution. Now we will also deal with stubble burning. क्यों होती है stubble burning and what are the farmers saying and how is it related to the minimum support price, पर एक करके step by step, right. So now what kept Delhi's air pollution from October 21st to 26th in the very poor category? Now there is this Center for Science and Environment. It is a Delhi based organization जो कि basically देखते हैं कि अच्छा क्या reasons हैं Delhi की air pollution को और ज्यादा जो खराब हो रहा है, air quality और खराब क्यों हो रही है. So what have they found out? They said 51% of the contribution is from vehicular emissions, is why BS6, BS3, BS4, Bharat standards, all of that becomes important. And they also said 13% is from residential sources, 11% is from industries, construction activities are also contributing, road dust is also contributing, and of course burning of waste and energy sector is also one of the reasons. So they also realized कि सिर्फ NCR से नहीं हो रहा है ये कहीं ना कहीं stubble burning जो हो रही है पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में, उसकी वजह से भी हो रहा है क्योंकि पैडी की कल्टीवेशन, उसका हार्वेस्ट का टाइम यही हो जाता है. इसको हम डिटेल में करते हैं, लाइक आई सेड, स्टेप बाय स्टेप. Now, rice is a very water intensive crop. We are going to deal with stubble burning, but let's talk about, why stubble burning happens. And, wind cycle is also a reason, correct? Why stubble burning is happening is the geography also related to stubble burning. So they say stubble burning ka impact. So rice is a water intensive crop. तो हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, बिकॉज HYV सीड्स जो थे उसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो ना काफी ज्यादा हमारा वाटर टेबल डिक्रीज होने लग गया, जिस वजह से अगर हमने राइस उगाना है विच इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, वी सॉर्ट ऑफ चेंज द सोइंग पैटर्न. सो द सोइंग पैटर्न ऑफ पैडी वाज शिफ्टेड फ्रॉम जून टू जुलाई, right, when the monsoon reaches Punjab. क्योंकि water table कम होने लग गया, तो we are rain fed agriculture. When we are rain fed agriculture, तो हम लोग sowing तभी करेंगे ना जब monsoon reaches Punjab. तो हमने इस चीज को हमने change कर दिया. Stubble burning is such a big problem to solve that a startup idea can be based on it. Very true. Let's deal with it in completely properly. सारे aspects देखते हैं. तो क्योंकि अब जुलाई तक कर दिया, तो हार्वेस्ट वाज शिफ्टेड टू द लैटर हाफ ऑफ अक्टूबर. तो अब हार्वेस्टिंग अक्टूबर में हो रही है. अब ये वाला फैक्टर कि अक्टूबर के बाद थोड़ा सा समय रह जाता है फार्मर्स के पास टू सो द व्हीट क्रॉप, वो बाद में करेंगे, पहले ज्योग्राफिकल रीजंस की बात करते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज अक्टूबर के टाइम पे it is said that the weather conditions are such, the wind cycle is such that it turns very, very unfavorable for the dispersion of the pollutants. Now इसी सीजन पे हम stubble burning कर देते हैं, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है और ये पूरा की पूरी विंड जो है वो स्मोक दिल्ली तक ले आती है और डिस्पर्जन बड़ा लो हो जाता है, जिस वजह से पार्टिकुलेट मैटर बहुत बढ़ जाता है. तो इट इज ब्रिंगिंग ऑल द स्मोक टू दिल्ली. अब वो दिल्ली में रह क्यों जाता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. नाउ विद द डेक्कन प्लेटो 500 किलोमीटर टू इट्स साउथ एंड द हिमालय टू इट्स नॉर्थ, the region stretches from Haryana to Bihar. It is a valley between two large structures. अब इसमें दिल्ली की अगर बात करें, it is sitting on the Aravallis. It has an elevation but of few hundred meters. तो क्या है कि स्मोक इधर से आ रही है और कहीं ना कहीं इधर सेटल डाउन भी बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि डिस्पर्जन इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, right? This makes Delhi a tabletop city of sorts, and it has a peculiar geography within the Indo-Gangetic plains, and it makes it susceptible to these critical episodes of very, very bad air quality. Now, experts have also said कि फिर पैडी ग्रो ही मत करो,
तो फार्मर्स को बोलो पंजाब में कि पैडी ग्रो मत करो, कुछ और ग्रो करो। लेकिन अभी तक ये नहीं समझ में आया है कि पैडी चल ग्रो कर रहे हैं, उसका हार्वेस्ट कब हो रहा है, पर उसको जला क्यों रहे हैं वो अभी थोड़ी सी देर में देखते हैं। ठीक है, अभी पहले हम लोग वो स्टबल बर्निंग का कॉन्सेप्ट करेंगे। पहले हम लोग एक और इंसान को कमेमोरेट करते हैं। लेट्स कमेमोरेट दिस मैन who was the first man in your country to have voted in a Lok Sabha election. And he has just passed away today, and he was 105 years old, and the name is Shyam Saran Negi. Not only is he important or popular or famous in Himachal Pradesh, he should be famous in our entire country, that at that particular age also, you know, even before passing away, he made sure that he casts his vote for the 34th time in his life. And, you know, even though the elections are supposed to happen later on, you know, it was, he was allowed to give a vote right before that. So we should all take inspiration from this man. Let's understand a little bit about him. So what happens is, November 12th को polls थे, लेकिन उनको 10 दिन पहले ही उन्होंने कहा कि I'm not feeling well and I want to give a vote पहले. In fact, he was the first man to give a vote in a Lok Sabha elections. Let's understand that and let's come down to this. So what happens, let's talk about पहले. So general elections in India were held for the very first time in February 1952. But voting in a high altitude area, he was from Connaught, a village in Connaught. It was very, very difficult to vote in a high altitude area. And so hence, वहाँ पे जो elections थे, वो 5 months in advance हो गए थे, October 25th, 1951 में हो गए थे. Because Election Commission of India को तब लगा था कि snowbound area हो जाएगा, हम वहाँ पे जाके polling station कैसे बना पाएंगे. तो 5 महीने पहले ही उन्होंने किन्नौर वाले एरिया में ये इलेक्शंस का पोलिंग स्टेशंस बना दिए. नाउ Shyam Saran Negi, he had to perform polling duties at that time in different booths. So he reached the government school of Kalpa करके उनका village का नाम था पहले, at 7 o'clock. And so he was allowed to cast his vote क्योंकि उसके बाद उनको polling duties करनी थी. And thus he attained the distinction of being independent India's first voter, right? He's not only a legend in Himachal Pradesh, but in our entire country. He had never missed voting in any kind of elections, whether that be Panchayat or State Assembly or Lok Sabha. That was his commitment towards Indian democracy. Now, 2 days ago, unki family ne bola that, he's feeling very, very unwell and he will not be able to reach the polling booth on health grounds. And so he wanted to exercise the option of sending a postal ballot. Ye ho sakta hai, electronically transmitted postal ballot system जब service voters के लिए हो सकते हैं, तो ऐसे लोग जो कि नहीं जा सकते polling station तक, उनके साथ भी हम लोग EVM की जगह we can give them an option of sending their vote through the postal ballot. And so, the election commissioners decided to make a big event of it. They didn't decide it right now. वो हमेशा होता है कि मतलब a red carpet used to be laid out for him, एक music वगैरह बजता होता था, just to commemorate the fact that this is the guy who voted for the very first time in independent India. So he was given a grand welcome by the election commission on a red carpet with traditional musical instruments. And this was for the 34th time that he had voted in independent India. Right? And he said that he had never missed any elections. He was also the Election Commission of India's brand ambassador to promote voter awareness campaigns. The last time he voted was in a by-poll for the Mandi parliamentary seat in November 2022. And as per ECI records, he voted for the first time, we've already spoken about it, in October 1951. He was also honored by the Chief Election Commissioner in 2010, who was Naveen Chawla, who had visited his village. And for years, इनके बारे में किसी को नहीं पता था. फिर एक former IAS officer, जो Chief Electoral Officer रहे थे, Manisha Nanda, she was the one who located this man and in 2007, and she checked from all the records, and that's when we came to know that he is the first person to vote in independent India. And Kalpa village was then known as Chini village in the Connaught district. Now, option of postal ballot is not new in our country. For the first time,
it is for the first time that it has been extended to everyone above the age of 80 years कि ठीक है आप नहीं आ पा रहे हैं आप फिर भी उसको वोट आप कर सकते हैं and also for people greater than 40% disability rate and also for absentee voters service voters की तो बात हमने क्लास में बहुत बार कर चुके हैं हम ठीक है अब इसको फॉर्म नंबर कौन सा होता है ये पोस्टल बैलेट में 12D is the name. In fact, in 2014 elections, Google had also made a video for Mr. Negi, and it was called Pledge to Vote campaign. And a special film में they told people, you know, how he was braving the snow and extreme cold in the high altitude Kalpa Valley, and how he was voting every single time. So that is something to keep in mind. And let's talk a little bit about the first Lok Sabha elections, and then we will go on to stubble burning, and we will talk about जो आपने बात की है कि बहुत कम time मिलता है sowing के लिए for the next crop. Now, first Lok Sabha elections. Now, first Lok Sabha elections were spread over 5 months. अभी हमें पता चल गया क्यों over 5 months. October. Yes, so am I. So October 1951. And February 1952 ठीक है इन महीनों में ये फर्स्ट लोकसभा की इलेक्शंस हुई हैं and after India became independent on August 15th 1947 you know Prime Minister Jawaharlal Nehru he formed his first union cabinet with 15 members and you know at that time what happened was लोगों से कैसे वोट कराएं क्योंकि only 15% of the people could read so we came up with this ingenious idea मतलब कर तो रहे थे हम रेडियो प्रोग्राम वगैरह कर रहे थे लेकिन उनको कैसे पता चलेगा कि किसको जाके वोट करना है तो इसीलिए वी केम अप विद दिस ब्रिलियंट आइडिया ऑफ अडॉप्टिंग अ डिस्टिंक्ट सिंबल फॉर ईच पार्टी कि मतलब अगर मैं पढ़ नहीं सकती हूँ लेकिन मैं सिंबल को देख के जरूर एनालाइज कर सकती हूँ कि मुझे कौन सी वाली पार्टी को वोट करना है Another very interesting aspect of the very first time Lok Sabha elections were taking place कि election commission में से लोग ना जा जाके लेडीज को बोल रहे थे मैरिड लेडीज को कि आप हमें अपना नाम बताओ आपको वोटर लिस्ट में हमने डालना है बट दे रिफ्यूज टू टेल देयर नेम्स यू नो बिकॉज बैक इन द डे देयर वाज दिस एंटायर थिंग वेयर यू नो women used to be they used to only take their husband's name कि so and so की बीवी राइट लेकिन इलेक्टोरल ऑफिसर्स आर लाइक भाई नाम बताओ आपका नाम नहीं लिख पाएंगे वी कांट से सो एंड सो की बीवी ने वोट किया यू नो व्हिच इज व्हाई अनफॉर्चुनेटली many women in North India did not get on the voter list for the very first time because of this reason. And then you also see कि जब हम वोट करते हैं एक इंक वगैरह हमारे फिंगरनेल के ऊपर लग जाता है वो इंक एक्चुअली डेवलप हुआ था इंडिया में to stop people from voting again and again. And this was manufactured by a government-owned paint company started by the Maharaja of Mysore. और ये वाली मैसूर पेंट कंपनी आज की डेट पे 30 और कंट्रीज को ये इंक प्रोवाइड करती है सो दैट इज ऑल्सो नाइस राइट people were so enthusiastic about the Lok Sabha elections that you know tribals of Odisha they came to the voting booth with their bows and arrows and Naga tribes जो है वो कई दिन तक hills पे you know climb करके गए थे कि भाई हमने वोट करना है इंडिपेंडेंट इंडिया में so such was the vigor with respect to democracy जो अभी बिल्कुल डाई डाउन हो चुका है इसको और ज्यादा हमें इम्पेटस देना चाहिए अच्छा और फैक्ट्स यू नो इट वाज सेड दैट नो वन शुड ट्रैवल मोर देन 2 किलोमीटर्स टू वोट तो पोलिंग बूथ्स वर आल्सो सेट अप इन रिमोट लोकेशंस इनफैक्ट फॉरेस्ट के अंदर भी किया था न्यूटन करके एक मूवी है राजकुमार राव की एंड पंकज त्रिपाठी की उसमें भी दिखाया गया कि ऐसे ट्राइबल एरियाज में यू नो फॉरेस्ट के अंदर वी हैव पुट द पोलिंग बूथ्स सो In 1962, Maharani Gayatri Devi, she was entered into the Guinness Book of World Record for having the largest landslide victory, you know, out of 2,46,000 something votes, she ended up getting 1,92,000 votes. अब इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट लोकसभा की Lok Sabha was constituted on 17th April 1952 and it lasted full 5 years, dissolved on 4th April and the first session of Lok Sabha commenced on 13th May 1952. Even for Rajya Sabha it is 13th May 1952. So that is that about your first Lok Sabha elections and Mr. Negi. Now let's go on to our stubble burning. So जैसे कि अभी बच्चे ने बोला कि क्या हो जाता है कि अक्टूबर के महीने में जब हम लोग पैडी को यू नो हार्वेस्ट कर देते हैं तो बहुत ही कम टाइम रह जाता है फॉर द सोइंग ऑफ द व्हीट क्रॉप अब क्या होता है वो जो स्टबल रह गई वो बड़ी इट्स वेरी वेरी हार्ड टू रिमूव इट नाउ एक तो चीज ये हो गई
कि हम लोग फार्मर्स एक मैनुअली उसको रिमूव करने के लिए लोगों को रखते हैं, but they will require 6,000 to 7,000 per acre. Now a big farmer can afford that, but a small and marginal farmer cannot afford that, so फिर उसके अलावा अगर हम बात करें, there are many other reasons, पर पहले इसी पेज पे जो लिखा है वो हम कर देते हैं. 10 से 15 दिन का टाइम मिलता है इनको after harvesting of the paddy crop and harvest se leke sowing of the wheat crop, only 10 to 15 days. Now within these 10 to 15 days aur kya kare, right? So there are many other ways. Let's talk about those ways and let's talk about their disadvantages also. By the way, not only stubble burning contributes to air pollution, burning stubble also degrades your soil's organic matter, beta. वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी रिड्यूस करता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई चाइना, यूके, ऑस्ट्रेलिया हैव फोरबिडन और डिस्करेज्ड स्टबल बर्निंग इन देयर कंट्रीज. अब ऑल्टरनेटिव और क्या है एक फार्मर के पास? तो एक और ऑल्टरनेटिव होता है जिसको हम बोल देते हैं हैप्पी सीडर मशीन. सो दिस इज बेसिकली अ मशीन जिसमें बहुत सारा फ्यूल डलता है, एंड दैट मशीन विल टेक आउट द स्टबल फ्रॉम योर फार्म. अब उसको ऐसा भी है कि एक पर्टिकुलर एरिया में बार उसको जाना पड़ता है, तभी जाके वो सारा स्टबल निकल सकता है. अनदर रीजन इज, मतलब अब क्या करें इसका? सो पंजाब सरकार बोलती है कि चलो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, बट द पॉइंट इज अ सिंगल हैप्पी सीडर मशीन कवर्स 10 acre per day, right? To clear 75 million acre of paddy fields in 15 days, Punjab requires 50,000 seeder machines, but the government has only distributed 24,000 seeder machines. So that is the first problem. The second problem is the fuel that goes into it. Again, we are not able to do this, on our own because we don't have that kind of money. Small and marginal farmers के पास इतना पैसा नहीं हो पाता है. Because of these reasons, we are not doing this. Now, the second thing is straw baler. तो एक और हमारे पास मशीन है जो ऐसे ऐसे करके घूम के जाती है फील्ड के ऊपर, और वो जो स्टबल है ना, उसके बेल्स बन जाते हैं. अब क्या है कि ये जो स्टबल के बेल्स जो हो जाते हैं, दे कैन बी यूटिलाइज्ड. स्टबल बाय द वे इज एन इनपुट फॉर मशरूम फार्मिंग. तो ये लोग क्या करते थे, इनके बेल्स बना देते थे, फार्मर को बोलते थे आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, और हम जाके ये मशरूम फार्मर्स को दे देंगे, हम पैसा कमा लेंगे. जब तक तो फ्री के लिए होता था तब तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नाउ दे हैव स्टार्टेड चार्जिंग 1000 to 1500 per acre. अब again, small and marginal farmer nahi de pa rahe hain. So this is also something that they are not doing. Another is chopper cum spreader. So chop karke spread kar rahe hain, this stubble. But again, it requires a tractor. ट्रैक्टर की कीमत ही बहुत ज्यादा हो जाती है बच्चे. अगेन, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर नॉट एबल टू डू इट. फिर एक और अप्रोच क्या है, PUSA डीकम्पोजर. तो कहते हैं PUSA डीकम्पोजर किसने बनाया? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. ये जैसी डीकम्पोजर डाल देंगे तो वो स्टबल में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो रह जाएंगे, बाकी डीकम्पोज हो जाएगा. तो लैंड भी फर्टाइल हो गया और आपको स्टबल बर्निंग भी नहीं करने की जरूरत पड़ रही. तो अब इस वाली चीज को क्यों नहीं कर रहे farmers? Why are they not utilizing this? The problem, according to the farmers, is that the decomposition takes 30 days and they have just a window of 10 to 15 days. राइट. तो अब एक और चीज है, कहते हैं एक और टाइप का पैडी आप उगा लो जिसका हार्वेस्ट पहले करना होगा, तो आपके पास वो टाइम ज्यादा रह जाएगा. देन यू कैन यूज PUSA डीकम्पोजर. पर वो उन्होंने ट्राई भी किया है, पर उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है उस पर्टिकुलर पैडी के क्रॉप की. नाउ शॉर्टर ड्यूरेशन वेराइटीज इज द वन आई एम टॉकिंग अबाउट. PUSA बासमती 1509. नाउ दिस कैन हैपन बट द प्रोडक्टिविटी इज रियली लेस. So hence a farmer who does not have that kind of money and of course does not have that kind of time either, उसके लिए आग लगाओ जला दो, that's better for him. तो इस वजह से ये लोग कर रहे हैं stubble burning. अब the next thing that we can say, which we have already read about, is that paddy grow ही मत करो, कुछ और grow कर लो. अच्छा, farmers भी कहते राइस कोई हमारा staple food नहीं है, हम थोड़ी ना राइस खा रहे हैं, हम तो हमारा स्टेपल फूड कुछ और है. हम राइस इसलिए उगा रहे हैं क्योंकि इसकी प्रोक्योरमेंट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है और इसके ऊपर हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है. मिनिमम सपोर्ट प्राइस वैसे 22 क्रॉप्स के ऊपर मिलता है
उनमें से एक क्रॉप है शुगर केन, उसके ऊपर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिलते हैं। लेकिन ये 22 क्रॉप्स की अगर हम बात करें, इसके अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द फार्मर्स, दे आर लाइक व्हीट और राइस के ऊपर तो मिल रहा है, बाकियों के ऊपर ना एमएसपी से भी कम पैसा मिल रहा है, इज व्हाट दे बिलीव इन. So they are like, give us an alternative crop with guarantee, we will shift from paddy farming. They also say, जब आप आग लगा रहे हैं तो वो स्मोक हमारे अंदर भी आ रही है. We're not very, very happy doing this. We have to do it because we are getting a guaranteed price. So ideally, मैम जीके क्विज नहीं होगा, बिल्कुल होगा बेटा. अभी इसको खत्म करेंगे, थोड़ा सा टाइम के बाद फिर 8 बजे वो करेंगे, ठीक है. जीके क्विज होगा, 110% होगा. फाइन. सो नाउ मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अगर हम बात करें तो ये कौन डिसाइड करता है? सो दिस इज डिसाइडेड बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस. कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस क्या है? एक अटैच्ड ऑफिस है, ये स्टैट्यूटरी ऑफिस नहीं है. बहुत सारी वेबसाइट्स पे इंक्लूडिंग Byju's, I think different websites say that it is a statutory body. Just go and check on the official website on your own if you're not happy with this answer, and you will go and figure it out. कोई ऐसी act नहीं है. It is not a statutory body. It is an attached office. Fine. Attached office of the government of India's Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, and it was established in January 1965. YouTube पे नहीं होगा बेटा, LMS पे होगा जीके का क्विज. The commission now consists of chairman. Chairman is Vijay Paul Sharma, is something that you can keep in mind. फिर कुछ और members भी होते हैं, non-official members भी होते हैं. इनका काम क्या होता है कि they will decide what should be the minimum support price for these 22 commodities. Now 23 इधर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे sugar cane भी है. Sugar cane के ऊपर MSP नहीं मिलता, fair and remunerative prices मिलते हैं. So 22 plus 1 is the ideal way to write this down. The second thing is fair and remunerative prices. ये sugar cane के लिए मिलता है. ऐसा price which should be remunerative to a sugarcane farmer and fair to a sugarcane mill. रेम्यूनरेटिव क्यों? क्योंकि शुगर केन फार्मिंग जो होती है पूरे के पूरे साल की तो होती नहीं, 4 से 6 महीने का काम होता है उनका. शॉर्ट क्रशिंग सीजन होता है, तो मुझे रेम्यूनरेटिव प्राइसेस नहीं मिलेंगे तो मैं क्यों करूंगी ये वाला काम. एंड ऊपर से वही शुगर केन का बाय प्रोडक्ट जो इथेनॉल है उसको आप ब्लेंड कर रहे हो पेट्रोल के साथ 10%, और 2023 तक आप 20% तक करने वाले हो. तो ऑब्वियसली शुगर केन फार्मिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? एंड सो हेंस फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस आर गिवन. अच्छा, किन्हीं स्टेट्स में जहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वहां पे स्टेट एडवाइजरी प्राइसेस भी मिलते हैं, वो एफआरपी से थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं. सो ये शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 व्हिच वाज इशूड अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955, इसके अंदर हम लोग एफआरपी बनाते हैं अपने कंट्री में. ठीक है. सो अब इसके अंदर ये हो गया ना, हाईएस्ट प्रोडक्शन वैसे यूपी को बोलते हैं. 2022 में महाराष्ट्र हैज टॉप द लिस्ट. और कीप लुकिंग एट इट, क्योंकि इन दोनों के बीच में होता रहता है फर्स्ट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू शुगर केन प्रोडक्शन. सो नाउ वीव अंडरस्टूड एयर क्वालिटी इन दिल्ली, वीव अंडरस्टूड द अथॉरिटीज इन दैट एयर क्वालिटी. हमें ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्रोग्राम के बारे में भी पता चल गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में भी हमने बात कर ली. फिर हमने रीजंस की बात की जहां पे वेहिकुलर एमिशंस, कंस्ट्रक्शन वगैरह की बात हुई. एक बात हुई हमारी स्टबल बर्निंग के लिए. नाउ वी नो स्टबल बर्निंग होती क्यों है, राइट? इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है? वी नो द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ Delhi, because of which the soot sort of settles in Delhi, and because of which the air quality index becomes worse. So a lot needs to be done with respect to this because of a simple fact that India, that is Bharat, is a union of states. चल यूटी है आपका दिल्ली, लेकिन फिर भी it is the national capital territory and we ought to do something about it, and center and state should come together to do this, right? अब ये चीज हमारी हो गई. Now last portion for today is how can a governor be removed from office. अब इसकी बात क्यों हो रही है? So Dravid Munitra Kazagam is का जो लीडर है टीआर बालू, राइट? इन्होंने कहा कि हम लोग सारे के सारे मिलके
तमिलनाडु का जो गवर्नर है RN राय, इसको हम निकालना चाहते हैं. सो अब अगर हम इसको निकालना चाहते हैं तो क्या एक राज्य सरकार, एक स्टेट गवर्नमेंट एक गवर्नर को निकाल सकती है कि सिर्फ सेंटर ही निकाल सकती है? लेट्स टॉक अबाउट इट क्विकली. नाउ गवर्नर की अपॉइंटमेंट and removal क्या होता है? Now under 155 and 156th article of the Constitution, governor is appointed by the president and holds the office during the pleasure of the president. Now pleasure of the president का मतलब क्या होता है? Pleasure of the president का मतलब ये है, बच्चे ये मैंने भेज दिया है, कोई बात नहीं, क्लास के बाद अगर हो सके हमारा क्विज के बाद मैं कॉल कर दूंगी, थोड़ा लेट हो जाएगा, नहीं तो कल सुबह सुबह मैं कॉल करके ये सारे PDFs आपको दिलवा दूंगी 110%. ठीक है? I have sent it from my end. If it has not come to you, I will definitely make sure that it does. Fine. If not tonight, because it will get too late, then tomorrow for sure. ठीक है? Okay. So Article 155, Article 156 of the Constitution, इसमें लिखा है कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? तो ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. और 5 साल नहीं बोलेंगे इनके टेन्योर को, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट बोल देंगे. प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट डज नॉट मीन कि शक्ल पसंद नहीं आई तो निकाल दिया. प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट बेसिकली मीन्स जिसके आधार पे, जिस रीजन की वजह से आपको गवर्नर बनाया, अगर आप वो काम नहीं कर रहे ढंग से तो आपको हमें निकालना पड़ेगा. सिंपल एज दैट. नाउ बच्चे, आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि गवर्नर जो है वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर के हिसाब से काम करेगा. लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां पे गवर्नर को बोला है कि आप अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर या संवैधानिक मनमर्जी करने वाली पावर यूटिलाइज कर सकते हैं. जैसे कि अगर आपने पढ़ा स्टेट के बिल को गवर्नर रिजर्व करके प्रेसिडेंट तक भेज सकता है, तो स्टेट के बिल को जब गवर्नर रिजर्व करेगा फॉर द प्रेसिडेंट्स असेंट, दैट विल बी अंडर गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर. सेकेंडली, एक गवर्नर ऑफ अ स्टेट एक एडजॉइनिंग यूटी का लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बन सकता है. सो जैसे चंडीगढ़ का लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन बी द गवर्नर ऑफ पंजाब ऑल्सो, अगर सेंटर चाहे तो. तो जब एक इंसान गवर्नर ऑफ पंजाब के तौर पे काम कर रहा है तो आइडियली अंडर आर्टिकल 163 he should listen to the CM and the Council of Ministers of Punjab. But when the same man becomes the Lieutenant Governor of Chandigarh, then he does not have to listen to the Chief Minister of Punjab or their Council of Ministers. तो वो भी एक उनकी discretionary power है. तो ऐसे ऐसे करके जो भी discretionary powers हैं वो अपने आप कर ले. बाकी चीजों के ऊपर he should listen to the aid and advice of the Council of Ministers and the Chief Ministers. Now, governor और state की relations. एक governor जो है, अगर मैं बोलूं, he is the quintessential example of quasi federalism in your country. True or false? माने इस इंसान को रखा तो सेंटर ने है, लेकिन वो नॉमिनल हेड किसका है? स्टेट का. हाँ, इसको सैलरी किससे मिल रही है? स्टेट से, लेकिन इसका रिमूवल कौन कर रहा है? सेंटर कर रहा है. ही इज लाइक अ ब्रिज जो हर 14 डेज में स्टेट की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो भी चीजें चल रही हैं, उसके बारे में नोटिस देगा, जाके किसको? सेंटर को नोटिस देगा. तो ही इज लाइक अ ब्रिज बिटवीन द टू. That is why he is the biggest and best example of the quasi federalism in our country. So, अब इसमें क्या है कि he enjoys a lot of powers which are discretionary, and on the other things he must listen to the aid and advice of the chief minister and the council of ministers. अब इसके अंदर जैसे कि बिल पास करने वाली मैंने आपको बात बता दी. फिर कभी कभार पार्टी हैज टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी. जैसे बैक इन 2018 कर्नाटका में क्या हुआ था कि बीजेपी जीत गई थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ये दोनों इकट्ठे मिल गए. अब नंबर्स के तौर पे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर वर लार्ज इन नंबर, लेकिन इलेक्शन के बाद तो बीजेपी वाज लार्जर इन नंबर. तो ये गवर्नर के ऊपर हो जाता है. इसको हंग असेंबली बोल देते हैं कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेजॉरिटी, कि उसको बीजेपी वाले लीडर को बुलाना है कि बाद में पोस्ट पोल अलायंस वाली जनता दल सेक्युलर और इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस लीडर को बुलाना है एंड उसको समय देना है टू प्रूव हिज मेजॉरिटी. तो ये भी उसकी पावर है. अच्छा, कितना टाइम देना है टू प्रूव देयर मेजॉरिटी, ये भी इसकी अथॉरिटी है. फॉर एग्जाम्पल 2 इंस्टेंसेस, जैसे कि महाराष्ट्र का जो गवर्नर था
उसने देवेंद्र फडणवीस को स्वेयर इन किया था चीफ मिनिस्टर के तौर पे 2019 में, जब हंग असेंबली थी। एंड उसी के बाद 80 आवर्स के अंदर अंदर उन्होंने अपनी खुद की गेम ऑफ थ्रोन्स करके किसी और को फिर बुला के फिर चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। फिर पंजाब के गवर्नर ने सितंबर में he refused to allow a special session in the Punjab Legislative Assembly for a vote of confidence of आम आदमी पार्टी। तो कभी कभार वो अपनी पावर्स को ढंग से भी यूज करते हैं, कभी थोड़ी सी ज्यादा भी डिस्क्रिशनरी वे से, आर्बिट्ररी वे से अपनी पावर्स को यूटिलाइज करने लग जाते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, स्टेट और अगर गवर्नर के बीच में पंगा हो गया, तो अगर हम लोग बात करें तो देयर आर नो प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द सेम, बट ट्रेडिशनली यू ऑट टू रिस्पेक्ट ईच अदर, है ना। तभी जाके तो हम लोग एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कर पाएंगे जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। फिर वो तो यार इंसान टू इंसान डिटर्मिन होता है। अब अगर कोर्ट के बारे में बात करें कि यार ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है, इसकी तो डेफिनेशन ही नहीं दिया आपने, और कोई इम्पीचमेंट तो होती नहीं है गवर्नर की, जैसे प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होती है, तो किस ग्राउंड पे निकालोगे। तो इसमें क्या है, सूर्या नारायण चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि यार ये तो बिल्कुल सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आपने नहीं दिया गवर्नर को, ये तो कभी भी निकाला जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। एंड व्हेन आई से प्रेसिडेंट, इट एक्चुअली मींस प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। दूसरा हो गया बीपी सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर की पोस्ट, क्योंकि क्या हुआ कि बीपी सिंघाल ने, बीजेपी के लीडर ने पीआईएल फाइल किया था फॉर द रिमूवल ऑफ, देयर वाज आर्बिट्ररी रिमूवल ऑफ उत्तर प्रदेश का गवर्नर, गुजरात का गवर्नर, हरियाणा का गवर्नर, गोवा का गवर्नर इन 2004। तो ही इज लाइक यार ये क्या आपने बना के रखा है तमाशा, आप तो कभी भी किसी को भी रिमूव कर देंगे, तो आपको कुछ तो बनाना चाहिए ना क्राइटेरिया। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार एट प्लेजर वाले डॉक्ट्रिन को डिफाइन तो करना पड़ेगा, लेकिन इसको हटा भी नहीं सकते। क्यों नहीं हटा सकते? अब कल जाके किसी स्टेट ने कोई ऐसे टाइप के काम करने शुरू कर दिए जिसके कारण ये थ्रेट है आपके फैब्रिक ऑफ द नेशन को, कि सेपरेटिस्ट मेंटालिटी रख लिया और सेंटर को आके नहीं बताया, तो वो भी हमारे लिए खराब है। ऑन दी अदर हैंड, अगर सेंटर अपना दबदबा ज्यादा बनाना चाहता है स्टेट के ऊपर, वो भी हमारे लिए खराब है। सो इट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप, a balance needs to be maintained is what they said. But they said in case you've removed a governor due to arbitrary, capricious and unreasonable manner, बेकार के मैनर में अगर आपने किया है, then definitely we will put judicial review upon that matter. And lastly, there are certain commissions also that have spoken about it, like it has to be used in rare and exceptional manner, ये सब बीपी सिंघाल ने बोला था। compelling and valid reasons भी होने चाहिए। and lastly commissions ने क्या बोला है इसके बारे में, तो पहली बात तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सरकारिया कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर द रिव्यूइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, ये वेंकटाचल्या वाज द हेड ऑफ दिस। इन सब ने बोला है कि यार 5 साल से पहले अगर आप गवर्नर को सैक कर रहे हो, दे बेटर बी रेयर एंड वेरी वेरी कंपेलिंग रीजंस टू डू द सेम। ठीक है, however none of them have been implemented, that is a different deal altogether. So that is your last point for today. Quickly you will give me the answer for this and then we will call it a day, and then we will do our GK quiz. Quickly tell me. So Indian Institute of Tropical Meteorology कौन सी वाली जगह पे है? जल्दी जल्दी बताओ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी कहाँ पे है? करा है आपने, अभी किया है। Nobody is answering. Why? So Indian Institute of Tropical Meteorology बच्चे पुणे में है, अभी किया था। This is the answer. तुम लोगों को सुन रहा है? The next one is in the cities of our country, which among the following atmospheric gases are normally considered in calculating the value of air quality index? बताओ।
इनमें से कौन सी वाली हैं in the air quality index? You will be able to nullify the options very very easily. बहुत क्लियर शब्दों में मैंने बताया है कि कौन सी वाली चीज AQI में नहीं आती है. बहुत बढ़िया हिमांश, very very proud. What about the rest of us? I missed the class, ma'am. कोई बात नहीं, you can see the recording later and you can ask your questions, not a problem बच्चे. बेटा आपको बताया था ना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता है इसके अंदर. अब सारे के सारे ऑप्शंस में 1 1 1 यही वाला ऑप्शन है जिसमें 1 नहीं है. अच्छा, तो इसमें हमें ये भी पता चल गया कि मीथेन भी इसके अंदर नहीं आता. इज दैट ओके एवरीवन? अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर सबसे चाहिए मुझे. कम ऑन, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नर. Consider the following statements. The parliament by law may appoint the governor of a state as the administrator of an adjoining union territory. And if a governor of a state is appointed as an administrator of an adjoining union territory, he shall exercise his functions as such administrator independently of his council of ministers. Only one, only two, both, none of the above. Come on. क्वेश्चन का समय आता है तो क्विकली दे स्टार्ट मूविंग आउट. भाई क्वेश्चन के लिए तो कर रहे हो, जीडी थोड़ी ना आएगा क्लैट में. क्वेश्चन जब आता है तो तुरंत ऐसे फुर होके निकल जाते हो. कम ऑन, मानसी कहाँ गई, राजू कहाँ गया, पल्लवी कहाँ गई, मोहित इज अ न्यू बी हियर. ओके, अलीसा खान, अनुश्री, come on. बेटा जी, अपॉइंटमेंट पार्लियामेंट नहीं करता, अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट. ये गलत है. एंड सो द आंसर इज बी. इज दैट ओके एवरीवन? I know that you know it was the president. I know that you overlooked the fact that it is written parliament, but kindly don't do that in the examination. Is that clear? Am I right? Chalo ji. Okay, then thank you very much. I will see you guys, some of you, whoever, and kindly give the GK quiz here. And it's not about how many marks, it's about the fact that we are revising 5 topics. So I'll see you in some time. Bye bye. Take care.